Good morning. In the continuation of Indian economy series, this lecture number second will discuss also the concepts of Indian economy as we will discuss today, like depreciation, balanced growth, and different sectors of economy like primary sectors, secondary sectors, and tertiary sectors. And there are some important notes which we will discuss: per capita income, capital gain, and types of economic systems. So this much we will cover in this topic. And after assuming this lecture, after listening this lecture, anybody would like to know about these topics. And definitely, as we already said, this is quite obvious that this session is useful for examinations point of view, like competitive examinations, university and college examinations, as an economy optional or economy subjects, and like debates and discussion presentations, some knowledge purpose and education purpose as well, and skill enhancement purpose as well, knowledge plus as well. So what we will discuss today is what about the Indian economy. In Indian economy, this lecture in Indian economy, this lecture will discuss its initiation from the depreciation topic. What is now the depreciation? As we have discussed in the lecture number 1, about few words about the depreciation. We will also discuss it in Hindi. तो आज का जो ये डिस्कशन है ये कुछ टॉपिक्स पे है, जैसे डेप्रिसिएशन. सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इज डेप्रिसिएशन इन हिंदी इट इज कॉल्ड टू बी एज मूल्यह्रास. सो व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? So the monetary value of an asset which is assuming, which is generating some capital, some money, which is generating some money, monetary value, that is called asset. So the monetary value of an asset decreases over time due to use, wear and tear, or wear and tear, or obsolescence, and this decrease is measured as depreciation. And this decrement in the monetary value of any asset due to some time period, due to some time, that is called to be as, that is assumed to be as depreciation. So depreciation is nothing but obsolescence. It is an obsolescence in the assets. It is an what? Obsolescence in the assets, that is called to be as depreciation. And depreciation will be calculated in some time period as well, as an decrement or minimization or contraction in the monetary value of any asset over some time due to wear, tear and use or utilization. डेप्रिसिएशन जिसको कि मूल्य ह्रास कहते हैं. मूल्य ह्रास का मतलब यह है कि किसी की मौद्रिक, अगर मौद्रिक वैल्यू, अगर किसी का जो मौद्रिक मान है अगर वो घट जाए समय के अनुसार, प्रयोग लेने पर, वेयर करने पर, कोई चीज धारण कर रहे हैं, प्रयोग में ले रहे हैं, और टेयर कोई टूट जाने पर, और किसी चीज के ऑब्सोलेसेंस मतलब होता है डिसयूज्ड होने पर, डेसिट्यूड होने पर, इसका मतलब पुराना पड़ जाना, अप्रचलन में हो जाना, कालातीत हो जाना, और कदीम हो जाना, और कहीं ना कहीं अप्रयोग में हो जाना. इसकी वजह से जो वैल्यू घट जाती है किसी भी कमोडिटी की, किसी भी चीज की, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जब घट जाती है किसी एसेट की, तो उसे ही मूल्य ह्रास कहते हैं. ऐसा ह्रास, ऐसा डेप्रिसिएशन, ऐसा डिक्रीमेंट, ऐसा डिक्रीज, ऐसा मिनिमाइजेशन जो किसी के मूल्य पर आधारित हो, किसी के मॉनेटरी वैल्यू, और मूल्य मतलब इकोनॉमी में मॉनेटरी वैल्यू से है, मौद्रिक आमदनी से जब कम हो जाए तो उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं. दैट इज व्हाई इट इज टर्म टू बी एज द डेप्रिसिएशन. नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड ग्रोथ? What is balanced growth? And balanced growth in Hindi, in balanced growth it is also called what? Santulit vikas. What is balanced growth? It is that there should be simultaneous and harmonic development of different sectors of the economy, so as to available a ready market for the product of different sectors, because there are different sectors in the Indian economy. What are the different sectors of an Indian economy? Either it may be primary sector, that may be something related to secondary sector, that may be related to tertiary sector as well.
So what is primary sector? प्राथमिक क्षेत्र, it is called the agriculture and its allied activities, field specialization or sector, that is called primary sector. So what is secondary sector? All the industrial areas, all the industrial sectors, all the sector which is related to industry, udyog, that is called the secondary sector. And what is tertiary sector? Service sector, which is called the seva kshetra, which is called the service sector, that is what termed to be as tertiary sector. So what is balanced growth? Balanced growth means it is there should be simultaneous and harmonic development of different sectors of the economy. If suppose there are all the sectors which are harmoniously increasing or developing simultaneously together, that is called balanced growth. Because from all the sectors there will be available some of the products for branding, for marketing, for distribution, for consumption. So wherever all the sectors they are booming, like primary sector, secondary sector, tertiary sector, they all are booming, that is supposed to be balanced growth. Balanced growth may also be assumed in terms of what? Something like sustainable development or sustainable growth. What is sustainable growth? Sustainable growth means samagra growth. What is balanced growth in Hindi? It is called samagra growth, संतुलित growth or संतुलित विकास, समग्र विकास, समावेशी विकास, संधारणीय विकास, सर्वस्पर्शीय विकास and सार्वभौमिक विकास. So that much of balancing, that much of डेवलपमेंट इज देयर, इतने ज्यादा प्रकार का विकास है. इसका मतलब यह है कि भविष्य का विकास करना, भविष्य की चीजों का निर्धारण करना, लेकिन वर्तमान के रिसोर्सेज और संसाधनों को बचाने के साथ साथ यह भी एक प्रकार का क्या है? बैलेंस ग्रोथ है. और सारे के सारे सेक्टर्स जब बराबर ग्रोथ करते हैं, क्योंकि सारे के सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं, अर्थव्यवस्था के हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आते हैं, कुछ ना कुछ उत्पादन होता है, सेवाएं होती हैं, और तब वितरण होता है, तब आहरण होता है. ये सब होने के लिए, ये सार्वभौमिक रूप से सर्वज्ञ होने के लिए ये जरूरी है कि सब चीजों का संतुलित विकास हो, सार्वभौमिक विकास हो और सर्वस्पर्शी विकास हो, समग्र विकास हो, संतुलित विकास हो. ऐसा तब आवश्यक होता है. जैसा कि यह भी एक वेल नोन फैक्ट है कि जो अनेकों प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो सेक्टर्स हैं, वर्ग हैं इकोनॉमी के, वो क्या क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र है, यानी सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र मतलब होता है टर्शरी सेक्टर. जहां पर जो प्राथमिक क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर मतलब कृषि और उसके जितने भी एलाइड, उसके संबंधित जो एसोसिएशंस हैं, संबंधित जो सेक्टर्स हैं, और उन्हें कहते हैं प्राथमिकी क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित क्षेत्र. और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कहलाता है द्वितीय क्षेत्र, मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र है उससे संबंधित क्षेत्र हैं वो. एंड टर्शरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र, जो सर्विस सेक्टर से संबंधित सेक्टर है वो कहलाता है तृतीय क्षेत्र. Now this is a point of a note here. What is the important note here? The important note is service sector contributes maximum to the GDP of country. So to the maximum of the GDP of any country, the service sector that is going to contribute in India, in our country, in the India, who is going to contribute maximum? The maximum contribution will be through the service sector or the tertiary sector. अब इसका हिंदी में यह है कि जो तृतीय क्षेत्र है, जो थर्ड क्षेत्र है, जो तृतीय क्षेत्र है, जो कि सेवा क्षेत्र है, उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में है, किसी अपने इंडिया की जो कंट्री है उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें. बिकॉज इसका मतलब यह है कि सेवा क्षेत्र आधारित जो कंट्री है वो है, और कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र का जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में है, और गुड्स एंड सर्विसेज में, सेवा और वस्तु के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं है सेवा क्षेत्र का. So now what is important is per capita income. What do you mean by per capita income? What is per capita income? In Hindi it is called prati vyakti aay. So a measure of the amount of money that is being earned per person in a certain area. Let us suppose there is an area or there is a territory. If there is an earning of an individual earning or earning of a person, that is termed to be, that measurement or quantitative measurement is called per capita income. This can apply to the average per person income for a city, let us suppose region or country,
and is used as a means of evaluating the living standard, living condition. So what kind of living condition, what kind of living standards all the individual or the citizen or the people of any country has, and quality of life in different areas. So in different areas, in where areas, in different cities, in different states, in different areas, or if in context to the nation, if different nation is per capita income is different. So what kind of per capita income is there in context to India? If we will say Indian economy, then we will say that per person what is the earning. So per person earning is supposed to be per capita income, prati vyakti आय. Or how we are going to calculate, the calculation of per capita income is there. It can be calculated for a country by dividing the country's national income. If suppose there is some amount of national income of one country, India here, upon total population, so that is called per capita income. Per capita income is equal to what? Whatever country's income, national income is upon or divided by population. So it means that per capita income into population is equal to national income of any country, of the country India. So this is what in Hindi it is called प्रति व्यक्ति आय. प्रति व्यक्ति आय वो मेजरमेंट है, वह क्वांटिटेटिव, वो मात्रात्मक मेजरमेंट है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है, हर एक रीजन में कितना अर्न करता है, कितना उद्यन करता है, कितना उद्यापन करता है, और कितना अर्जन करता है, अर्थार्जन करता है, वही कहलाता है प्रति व्यक्ति आय कहलाता है. और प्रति व्यक्ति आय किसी भी सिटी में, रीजन में, कंट्री में, स्टेट्स में, राज्यों में अगर देखा जाए, किसी भी कंट्री के रेस्पेक्ट में भी देखा जाए, तो वो ये दिखाता है कि क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या जीवन जीने की स्थिति है, क्या जीवन जीने का जो मापदंड है, मानदंड है, और क्या स्टैंडर्ड वो क्या है अलग अलग जगह पर, और क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी वह क्या किस तरीके का जो गुणात्मक अध्ययन है जीवन का, वह है कि किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, क्या माइजरेबल लाइफ है, क्या हैप्पी लाइफ है, क्या बहुत, क्योंकि जिसकी ज्यादा इनकम होगी, कम से कम जो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स होंगी वो तो अत्यधिक वो पूरी हो जा रही होंगी, कम से कम उससे होने वाली जो व्याधि विकार है वो नहीं होंगे. इसीलिए पर कैपिटा इनकम मतलब यह है कि जिसकी ज्यादा इनकम है वो कहीं ना कहीं जो संसाधनों से तो हैम्पर नहीं हो रहा होगा. सो पर कैपिटा इनकम ऑलवेज डिसाइड्स द फिजिकल फिनोमिनन और द फिजिकल प्लेजर ऑफ एनी ऑफ द रीजन, एरिया और कंट्री की फिजिकल जो एसेट्स है, जो भौतिक संसाधन है, वो किस तरीके से पूर्ति में आ रहे हैं, इसके बारे में प्रति व्यक्ति आय की चर्चा होती है. किस तरीके से जो आवश्यकताएं डेली डे टू डे नीड्स की वो पूरी हो रही हैं. तो अत्यधिक अगर आय ठीक है तो अच्छा है, कम है तो ऑब्वियस सी बात है देयर वुड बी सम स्कैर्सिटी एज वेल, कहीं ना कहीं थोड़ी कमी भी रह सकती है. तो इसलिए पर कैपिटा इनकम वो इंडेक्स है, वह मेजरमेंट है, वह सूचकांक है, जिसके आधार पर अगर लिविंग स्टैंडर्ड है या क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड किया जा सकता है. अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी निष्कर्ष एसर्शन में आता है तो यस, यह भी एक पॉइंट है, डेफिनेटली इट इज अ पॉइंट और एन इंडेक्स और सूचकांक. सो व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन हियर मींस व्हाट, कि किस तरीके से कैपिटल गेन मतलब ये होता है कि कैसे कैपिटल को गेन करना, मतलब जो पूंजी होती है उसका अर्जन करना. तो पूंजी का अर्जन करना उसे ही कहते हैं कैपिटल गेन. पूंजी का अर्जन और पैसे का अर्जन करना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन. सो इट इज द प्रॉफिट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ सेल ऑफ कैपिटल. लेट अस सपोज देयर इज अ सेल ऑफ सम कैपिटल एसेट्स, and what is the profit earned by the sale of that capital asset such as stock, bond or real estate where the sale price exceeds the purchase price. Definitely to have a gain in capital, definitely there would be what? Maximum sale price as compared to purchase price. If selling price would be more than the cost price, then there will be profit. If profit is there, then only if that profit is in terms of capital, that is called capital gain or capital profit. So what it is now? Capital gain. Capital gain, it is the profit that results from a sale of capital assets such as stock, bond or real estate. Real estate means construction sector. Real estate like lands and also
where the sale price exceeds the purchase price। अब कैपिटल गेन बोले तो किस तरीके से पूंजी का जो अर्जन है, पूंजी का जो लाभ है, पूंजी का लाभांश अर्जन है, वो क्या होता है, ये एक ऐसा प्रॉफिट है, ये एक इस तरीके का लाभ प्रकट करना है जो कि किसी कैपिटल एसेट्स को बेच करके जो भी लाभ मिल रहा है, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गए, क्योंकि बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट, भी करती है, कोई और भी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जनरली अपने बॉन्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बॉन्ड इशू करती है और उस बॉन्ड से पैसे ले लेती है और फिर बॉन्ड इशू करते हैं। जब बॉन्ड को वापस देते हैं तो उस समय पर जो भी चीजें, जितने का वो चीजें पैसा मिल जाता है। तो कहने का मतलब स्टॉक हो गया या बॉन्ड है, स्टॉक एक्सचेंज है, share market hai, subjected to market as well, so depending upon the performance of the top 30 index, so like this stock, bond और real estate where the sale, अगर जहां पर रियल एस्टेट में जहां पर सेल प्राइस अगर परचेज प्राइस से ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट कैपिटल गेन के रूप में होगा। अगर कहा जाए इट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हायर सेलिंग प्राइस एंड अ लोअर परचेज प्राइस, डेफिनेटली ये एक अंतर है, ये एक अंतर है किस किस के मध्य है, कि सेलिंग प्राइस जो कि ज्यादा है, हायर सेलिंग प्राइस, और लोअर यानी कम, न्यून जो परचेज प्राइस है, और ऐसे क्रय और विक्रय मूल्य जिसे कह सकते हैं वो हो सकता है। So what is the types of economic system? Very important here is what a types of economic system, we will say something like there are 4 primary types of economic system globally. So what are the 4 primary types of economic system globally? One is called a traditional economic system, and another is command economic system, and third one also is market economic system, and also is mixed economic system. So there are 4 economic systems generally. First one is traditional economic system, somehow command economic system, which is also called socialist economic system, and market economic system, which is also called capitalist economic system, and mixed economic system it is. There is also one more that is called mixed economic system. So what is traditional economic system? Traditional economic system is the traditional or ancient type of economy in the world. So traditional economic system, that is an ancient or a conventional type of economic system already in the world or globally. So a product and services that are direct results of their beliefs, customs, tradition, religion, etc. are products in this system. Of the products and services, who are the products and services in this type of economic system, this type of traditional or conventional ecosystem? Belief, like that is based on belief, custom, tradition, religion, etc. And there are a certain elements of traditional economy that those is more advanced economic systems such as mixed economic system. So it means that traditional or conventional ecosystem, that economic system that is based on the belief, custom, tradition, religion, etc. for the products and services in their economic system, and that is an ancient type of or conventional type of economic system that is being employed in the economic system in that is being recognized globally. So traditional economic system जिसको बोलते हैं पारंपरिक अर्थव्यवस्था, why it is called in हिंदी पारंपरिक अर्थव्यवस्था, और जनरली कहीं ना कहीं ये एक विकासशील और डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें पाया जाता है। इट इज मोर प्रिविलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इसको कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं एग्रेरियन इकोनॉमी इट इज आल्सो समहाउ कॉल्ड टू बी एज, और बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सम कुछ कस्टम्स हैं, नियम हैं, बिलीफ, विश्वास हैं, मत हैं अपने, और ट्रेडिशन, कुछ परंपराएं हैं, और जो धर्म आधारित जो अर्थव्यवस्था होती है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को ट्रेडिशनल अर्थव्यवस्था या ट्रेडिशनल आर्थिक तंत्र कहते हैं, अर्थव्यवस्था तंत्र कहते हैं। क्योंकि 4 प्रकार के अर्थव्यवस्था तंत्र में एक ट्रेडिशनल अर्थव्यवस्था तंत्र यही है कि इसे पारंपरिक अर्थव्यवस्था या पारंपरिक अर्थशास्त्र तंत्र भी कहते हैं। So what is command economic system? In terms of economic advancement, the command economic system is the net step up from a traditional economy. So that is more than a traditional economy. So what is the most important feature in this economy is that large part of the economic system is controlled by the centralized power of a federal government. So if there would be a federal government, let us suppose the government is going to drive the economic system, that kind of economic system is supposed to be the command economic system or a state based economic system, socialist economic system it is also called.
तो जैसे इसको बोलते हैं समाजवादी या कमांड टाइप, सोशलिस्ट या समाजवादी टाइप इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय द सोशल वेलफेयर। ये कहीं ना कहीं सामाजिक भले के लिए, जो लोक कल्याण के, समाज कल्याण के, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की गई ऐसी आर्थिक तंत्र को, इस तरीके का आर्थिक तंत्र जो होता है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, वो आधारित होता है कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर में, सामाजिक उत्थान में, यानी सामाजिक वेलफेयर यानी कल्याण में। और जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लें समाजवादी का, तो समाजवादी का जो उदाहरण है वो है उत्तर कोरिया है, क्यूबा है, ये सब दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट समाजवादी, लाइक सोशलिस्ट और कमांड और व्हाट social welfare, samajwadi or socialist like this. And samyawadi it is also sometimes called, because samyawadi arthavyavastha it is all, because the state is also going to what, state is also going to have somewhat fix the, federal government is also going to fix the norms of this type of economic system for the welfare, for the what welfare, but it is sometimes, mostly it is called socialist or what, or like command social welfare, command economic system. Now the next is what, next is market economic system. So what is market economic system? In Hindi it is called capitalist economic system, in Hindi it is called पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, totally based on the profit earning. So the market economy is very simple to free market, because market economy is very very similar to a free market, and the government does not control vital resources, valuable goods or any other major segment of the country. In this way, organization run by the people determine how the economy runs, how supply is generated, what demands are necessary. Based on the demand and supply or the market driven forces, this kind of economic system is employed. That is why it is called market economic system, or it is called market driven economic system, it is also called. So it is called Poonjivadi Arthvyavastha. It is based on profit earning, and there is a role of invisible hands. Sometimes it is called invisible hands economy system, because the private players, they are playing a major stake in this kind of economic system. नाउ क्योंकि ये मार्केट बेस्ड होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे सिंगापुर, अमेरिका है, और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट और लाभ पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें पूंजीपतियों का स्वामित्व भी होता है, और कहीं ना कहीं मार्केट की लाभ हानि पर और मार्केट की पूर्ति और डिमांड और सप्लाई, जो मांग और पूर्ति है, उसके आधार पर ये चलने वाली अर्थव्यवस्था होती है. Now next is what? Mixed economic system. What is mixed economic system? A mixed economic system also known as dual economy. द्वैध जो है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र. So it is a combination of economic system. It is primarily refers to a mixture of market as well as command economic system. And in this type of economic system, the market is more or less free of government ownership except for a few key area. So it means that there is a role of government as well as private stake players, or private stakeholders and public stakeholders, to determine this kind of economic system. That is why it is called mixed economic system. मिश्रित अर्थशास्त्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं और जो पब्लिक स्टेक होल्डर्स हैं, उन दोनों का, यानी गवर्नमेंट का और जो प्राइवेट ओनर्स हैं, उन सभी का एक मिश्रित स्वरूप रहता है, मिला जुला स्वरूप रहता है, किसी भी आर्थिक तंत्र को फिक्स करने में, क्रमबद्ध करने में और डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में और बनाने में. तो कहीं ना कहीं इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था. मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का, पूंजीवाद और साम्यवाद या समाजवाद दोनों का एक प्रकार का मिला जुला रूप रहता है. जैसे भारत है, भारत क्या है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां पर सोशलिस्ट कल्चर भी है और मिक्स्ड कल्चर, प्राइवेट कल्चर भी है, गवर्नमेंट का भी इंक्लूजन है, और state also has a deciding factor, and private players also, private stakeholders has also a deciding factor. It is called what? Mixed economic system. It is called, इसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं. और जो
There are many more economic systems also, like digital economic systems, green economic systems, and shared economic system it is also called. So what we have discussed in economic system, there are four economic system, like traditional economic system, which is called पारंपरिक अर्थव्यवस्था और अर्थतंत्र, अर्थशास्त्रीय तंत्र, or we will call command economic system, which is also called समाजवादी और कमांड जो है अर्थव्यवस्था तंत्र, which is also called market economic system, which is called what capitalist economic system, which is पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, profit earning like America and Singapore. As we all know, if we will see in terms of Uttarakhand, तो Uttarakhand the all the Paryatan, all the tourism models is which is belonging to the synchronization of Singapore here also. ये भी एक प्रश्न ऐसा कई क्वेश्चंस में आता है. एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था. So if summarily if you will see about the today's lectures, lecture number 2 of the Indian economy, we will say about the depreciation, how it is the monetary value decrease over time due to wear, tear or obsolescence, and balanced growth, about the balanced growth, the harmonic development of different sectors, that is what promoting all the production means and distributions of the different sectors, that is balanced growth, समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विकास, different sectors of economy like primary sector प्राथमिक क्षेत्र, secondary sector द्वितीयक क्षेत्र, tertiary sector तृतीयक क्षेत्र, primary sector where resembles agriculture and allied sector, secondary sector which where resembles industrial sector, and tertiary sector where resembles service sector, and service sector contributes maximum to the GDP or gross domestic product of the country. And per capita income is the measure of the amount of money that an individual or a person earn, and that is a measurement or an index for the living standard, for knowing the living standard and the quality of life, and how it can be calculated when the national income is divided by the population. Then that is why the per capita income is getting to be earned or to be known or quantified. What is capital gain? Gain is the profit earned by the sale of capital assets such as stock, bond, or real estate. Likewise, it is called capital gain. And there are what for assuming capital gain, there should be a higher selling price as compared to lower purchase price. There should be a difference between the higher selling price and lower purchase price, and that difference is nothing but the capital gain only. So types of economic system, there are basically globally recognized four primary types of economic system, like traditional economic system, which is conventional economic system. In Hindi it is called पारंपरिक अर्थशास्त्रीय तंत्र. Command economic system, which is also called samajwadi or something like socialist or state sponsored, we will generally say economics, state interfered economic system, or market economic system, which is also called capitalist economic system like America and Singapore. And socialist and command social welfare like Uttar Korea, North Korea and Cuba. And mixed economic system, that is a mixed blend of both private and public stakeholders, or state and what private players. So that is, for example, India. So, and conventional ecosystem economic system basically resembles agrarian economic systems also for the developing nations, developing countries, more prevalent in the developing countries also. So this one, and there are more nowadays growing economic system like digital economic system, green or harit arthashastriya vyavastha, like this green, where there is a concern about the environment and safety of the environment. And shared means sharing or the mutualing of the what mutual growth and sustainable economy. Circular economy, which may also sometimes called to be as the circular economy, means the economy which is having zero waste. So that is circular economy. So there are many more things, there are many more types of economic systems, economy as well. So in this lecture, what we have discussed about these topics which we have seen yet, and in the coming lectures also, in the lecture number 3 as well, we will discuss much more on this Indian economy. Today's lecture is quite helpful, as obvious, for the examinations point of view, university competitive examination knowledge point of view, debates, discussion, presentations.
and many more knowledge plus. So this is all about the lecture number 2 of Indian economy.